Hello students, how are you? I hope you all are fine. So as you know, we have already discussed the complete explanation of the poem How to Tell Wild Animals. So today we will discuss the poetic devices used in this poem. So firstly, we will start from the first stanza. So I'm going to read the first stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, and if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So here, first poetic device used in this poem is rhyme scheme. सो व्हाट इज़ अ राइम स्कीम? राइम स्कीम वो स्कीम होती है जब कोई भी पोएट अपनी पोम में म्यूज़िकल सिमिलैरिटी लाने के लिए कोई भी एक ही जो है सेम पैटर्न फॉलो करता है तो वहाँ पर राइम स्कीम का यूज़ होता है. लाइक हियर यू कैन सी चांस एडवांस मीन्स चांस एंड एडवांस राइमिंग. ईस्ट बेस्ट they are rhyming. Dine loin they also are rhyming. So we can call chance advance A. Then east and beast are rhyming, then we can call them B. Then dine and loin are rhyming, then we can call them C. So here you can see the rhyme scheme is A, B, A, B, C, C. Okay? A, B, A, B, C, C is the rhyme scheme used in this poem. So second poetic device used in the stanza is enjambment. So I think you very well know about enjambment. What is enjambment? When same sentence continuing in lines, in same lines, without any punctuation, without any full stop, without any marks. So we can say that then there is enjambment. So here you can see the first two lines, there is no punctuation mark, no full stop, no question mark. So here enjambment is used. Now the third and fourth line, they here also enjambment is used, and also fifth and sixth line enjambment is used. So second poetic device is enjambment. थर्ड इज इन्वर्जन. व्हाट इज इन्वर्जन? कि एज यू नो जो हमारा ऑर्डर होता है, लाइक पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, देन आफ्टर वी हम जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. लेकिन कई बार जो पोएट जो है अपने पोएम में म्यूज़िकल इफेक्ट डालने के लिए या फिर राइमिंग के लिए जो है अपने अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को यूज़ करता है. जैसे कि यहाँ पर जो शुड टू यू एडवांस, ये उसने अपने अकॉर्डिंग ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर जो है इन्वर्जन का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एजोनेंस. एजोनेंस मीन्स प्रोमिनेंस ऑफ वोवल साउंड इन अ लाइन. So here you can see line 1 and line 3 and line 5. O sound is most prominent. Why? You can see you should go. O sound. Then third line should to you. O sound. Then roads you. You are. Same. O sound is most prominent. So assonance is used in this stanza. So let's move on the second stanza. So second stanza is, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So first rhyme scheme is similar, that is A, B, A, B, C, C. How? You can see round you. Round, ground, you, learn, discern. So, same rhyming scheme. We can call round, ground is A, you, that is B. Then same learn, discern is C. So rhyming scheme is same, A, B, A, B, C, C. Same rhyming scheme. Then third is enjambment. Alliteration.
Alliteration. What is alliteration? Alliteration means repetition of consonant sounds. Like you can see roaming round. Roaming round means R sound is most prominent. It is repeating again. That is alliteration is used. Then third most important is inversion. Inversion. Where is inversion is used? You can see the fifth and sixth line. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So here you can see जो ये बंगाल टाइगर था ये जो है बाद में आना चाहिए था डिसन के, लेकिन पोएट ने म्यूजिकल इफेक्ट और राइमिंग के लिए यानी कि लर्न एंड डिसन राइम करे इसीलिए उसने इसे पहले यूज़ किया है. दैट्स इट मीन्स इन्वर्जन इज यूज्ड. ओके. Assonance is used in this stanza. So where assonance is used? Line 1 and line 3. So line 1 is, or if some time when roaming round. Some roaming round. O sound is most prominent. Then is line 3. With black stripes on yellow ground. On yellow ground. So O sound is most prominent. So what is? Assonance is used here. Then allusion. Allusion means कि कोई भी चीज़ किसी भी फेमस जब हम किसी भी फेमस चीज़ को यूज़ करते हैं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो टाइगर. यहाँ पर किस टाइगर की बात कर रहे हैं? बंगाल टाइगर. यानी कि ये टाइगर कहाँ बहुत फेमस है? बंगाल के अंदर. बंगाल के अंदर ये जो इनकी स्पीसीज़ है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है. तो यहाँ पर जो है हमने एक फेमस स्पीसीज़ का यूज़ किया, दैट इज़ बंगाल टाइगर. सो सेम यहाँ पे एल्यूजन का यूज़ हुआ है. यू कैन सी द फर्स्ट पैसेज ऑल्सो. फर्स्ट स्टेंजा में एशियन लॉयन का यूज़ हुआ था कि यानी कि ये लॉयन कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी फेमस स्पीसीज इनकी की जो कि एशिया में पाई जाती है. सो इसीलिए इसका नाम पड़ा एशियन लॉयन. सो यहाँ पर भी क्या है? एल्यूजन का यूज़ हुआ है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. So, same rhyming scheme is used in this stanza. You can see view, you, peppered, leopard, pain, again. So view, you, we can call them A. Then peppered, leopard, we can call them B. Then pain, gain is C. So A, B, A, B, C, C. You can see in all the poem same rhyming scheme is used. The next one is alliteration. Alliteration, you can easily identify what is alliteration and what is so alliteration is repetition of consonant sound. So in line 3 you can see he has. So he has means H sound is most prominent and it is repeated, so alliteration is used. Then next poetic device used in this stanza is poetic license, and I have already told you about this poetic device while explaining the poem, that is poetic license. What is poetic license? कि जो poet अपनी पोएट्री के अंदर कुछ म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए या राइमिंग क्रिएट करने के लिए जब वो स्पेलिंग्स को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड poetic license. So here you can see leapt, then again leapt. So A is missing in these words. So here poet has used poetic license. Then is repetitions. Repetitions इसमें जो है repetition means इसमें वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है एम्फासिस करने के लिए. ठीक है. Then so like लैप एंड लैप, यू कैन सी ये जो दो वर्ड हैं ये बार बार यूज़ किए जा रहे हैं. सो यहाँ पर रिपीटिशन है. दैन इज एजोनेंस. एजोनेंस, सो एजोनेंस इज यूज इन लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 5.
So you can see strolling forth you. So strolling forth you, इनमें O sound जो है most prominent है. Then is line 2, whose spots, same, O sound is most prominent. Then in line 5, do, no, good, to, roar, same, O sound is most prominent, so assonance is used. Next poetic device used in this stanza is consonants. What is consonants? The repetition of consonant sound. अब ये जो है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडल ऑफ द वर्ड भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं. So in line 6 and line 3. So firstly we see line 3. So line 3, you can see as soon as has, means S sound is most prominent. Then in line 6, he will only lap again, means will only lap, means L sound is most prominent, so consonants is used here. So let's move on the next stanza, that is, if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. So same, the poetic devices, rhyming scheme is used in this stanza. You can see yard, hard, there, bear, guess, caress. So yard is A, hard is A, there is B. So bear is also rhyming, bear is B, guess and caress is C. So same rhyming scheme is used in the stanza A, B, C, C, C. Then is, you can see enjambment is used. What is enjambment? When same sentence continuing in same lines. Like you can see first line, if when you are walking around your yard you meet a creature there. So enjambment is used in these lines. Then line 5, if you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Enjambment is used. ओके, सो जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है वो है इंजैबमेंट. थर्ड पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. सो वेयर इज एलिट्रेशन यूज? यू कैन सी when walking. So W sound is most prominent, so alliteration is used. Then you can see who hugs. अब आप ये कहोगे मैम यहाँ पे तो स्पेलिंग तो WH से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम किसके ऊपर जो है हम किसको प्रेफर देंगे? साउंड को. अब यहाँ पे साउंड हु का साउंड किससे आ रहा है? हु, यानी एच साउंड यहाँ पे जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है, तो एलिट्रेशन का यूज़ यहाँ पे हुआ है. देन नेक्स्ट लाइन इज बी श्योर इट्स अ बेयर, यानी कि बी एंड बी जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. देन इज एजोनेंस. एजोनेंस का यूज़ यहाँ पे हुआ है. वेयर यू कैन सी बी शो it's a bear. Okay, then meet creature there. So E sound is most prominent in this line, so assonance is used. Let's move on the next stanza. Though to distinguish beasts of prey, a novice might none plus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So in this stanza, same rhyme scheme is used. You can see prey, me, non plus, thus, smiles,
crocodiles. So same rhyme scheme ABA BCC is used in this stanza. Then second is alliteration. Alliteration is used in this stanza. You can see second line. A novice might non-plus. So end sound. End sound is repeating. So alliteration is used. Then you can see the line fourth. Tell from the hyena thus. यानी कि th, the sound is repeating. So alliteration is used. So third poetic device used in this stanza is enjambment. So in line 1 के end में and line 3 के end में enjambment का use हो रहा है. देखिए, though to distinguish beasts of prey, a novice might non plus. So here enjambment is used. Then the crocodile you always mean tell from the hyena thus. So same enjambment is used. So let's move on the next stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. So same rhyme scheme is used in this stanza also. You can see small, all, thing, wing, tree and sea rhyming. So same rhyme scheme is used. A B A B C C. Then we can say alliteration is used in this stanza. So in line 3, he hasn't. H sound is repeating. So alliteration is used. Then is consonants. Consonants is used in this stanza also. You can see line 4 and not a single wing. So G sound is most prominent. So consonants is used here. So now you will ask, ma'am, what is the difference between alliteration and consonants? So बेटा alliteration में क्या होता है कि जो consonant sound होता है वो most prominent होता है किसी भी word के starting में. जैसे कि आप इसमें देख सकते हो he hasn't. H sound है वो word के starting में यूज़ हो रहा है. सो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होता है उसमें भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स ही होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है एलिट्रेशन तो स्टार्टिंग में यूज़ होता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, लेकिन ये कहीं भी मिडल ऑफ द वर्ड, स्टार्टिंग में या फिर एंड ऑफ द वर्ड ये यूज़ हो सकता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल मिडल में यूज़ किया गया है. विंग ये यहाँ के एंड में है, तो यहाँ पर जो है जी साउंड मोस्ट प्रोमिनेंट है. सो कॉन्सोनेंट्स का यहाँ पर यूज हुआ है. सो इट्स ऑल अबाउट योर पोम. सो वी विल मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो.